Hello everyone. How are you all doing? फ्रेम बिल्कुल ठीक है. चेक करते हैं. सबसे पहले स्वागत है आपका एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर. It's called Cricket with Jamie, brought to you by Dafa News. मैं हूं जेमी. um, चर्चा हो रही है पिछले 24 घंटे में कि क्या रोहित शर्मा का जो स्टेटमेंट रहा रांची जीत के बाद वो किसकी तरफ थी और a lot of things we've discussed and as well as in yesterday's live stream as well. Reports today that KL Rahul, as I expected, will not perhaps be fit for the fifth test. और वैसे भी अगर फिट होते हैं क्या फायदा केएल राहुल को एक टेस्ट मैच खिलाने के लिए जब उसके बाद आईपीएल है और आईपीएल के बेसिस पर अगर वो रन बनाए लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए तो फिर वो वापस टी20 स्क्वाड में आ सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए. बट द न्यूज व्हिच आई बीन वेटिंग टू हियर अबाउट एंड अब तक कुछ खबर तो नहीं आई डायरेक्ट इसके क्या वाइस कप्तान जसप्रीत बुमराह वापस आएंगे पांचवें टेस्ट मैच के लिए. Certain reports stated after the third test when the BCCI gave rest to, like I've mentioned in many live streams, the best bowler visible on either side in this absolutely absorbing four test match series. जब बीसीसीआई ने अपने वाइस कैप्टन और बॉलिंग स्पीयर हेड बुमराह को ब्रेक दिया था तो कुछ रिपोर्ट्स थे कि शायद ये प्री डिसाइडेड यानी कि सीरीज से पहले की डिसीजन थी कि जसप्रीत बुमराह को चौथे टेस्ट मैच के लिए रेस्ट देंगे नो मैटर वेयर दिस सीरीज इज. अब रोहित शर्मा की टीम सीरीज जीत गई, एक अहम सीरीज जीत गई विद अ फैंटास्टिक विन इन रांची. और अब 4-5 दिन के गैप के बाद पांचवा टेस्ट मैच है धर्मशाला में. विल जसप्रीत बुमराह नाउ कम बैक? शुड जसप्रीत बुमराह नाउ कम बैक? मैं तो कह चुका हूं जरूर उनको आना चाहिए. यदि बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट और जो भी जसप्रीत बुमराह के इनर सर्कल में है इन रिगार्ड्स टू हिज फिटनेस एंड हिज वर्कलोड मैनेजमेंट, यदि ये डिसीजन पहले से लिया गया था कि केवल चौथे टेस्ट मैच के लिए बुमराह को रेस्ट देंगे तो जरूर बुमराह वाइस कैप्टन लाइक आई मेंशन उन्हें वापस आना चाहिए. द टीम नीड्स यू. सीरीज जीत चुकी है, बहुत लोग इसे एक डेड रबर मैच कहेंगे लेकिन यू नीड टू शो लाइक द बीसीसीआई इज सेइंग, लाइक रोहित शर्मा इज सेइंग, you need to show that test cricket matters in these challenging times and I would love to see बुमराह come back. अगर उनको सिर्फ एक मैच यानी कि चौथे टेस्ट मैच के लिए ब्रेक दिया गया था तो जरूर मैं चाहूंगा और मैं मानता हूं आप में से बहुत लोग भी चाहेंगे कि वापस आकर जसप्रीत बुमराह उसी अंदाज में गेंदबाजी करे जैसे कि हमने तीनों टेस्ट मैच में देखा था. ही इज अ रेयर वंस इन अ लाइफ टाइम बॉलर. Yes, of course, he has the IPL for Mumbai Indians. Yes, of course, he has a T20 World Cup to play. But right now, you've got your break. You've had ample break. So, हो सके कोई और प्लेयर को ब्रेक दे दे वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर. खबर आ रही है कि शायद एक दो प्लेयर को जरूर बीसीसीआई सिलेक्टर्स ब्रेक देंगे इस चौथे टेस्ट मैच के लिए. Which is adds to my point that if Jasprit Bumrah is fit, if he's got the required break he was due or he was promised or as discussed, तो जरूर उनको वापस आकर गेंदबाजी करनी चाहिए. What do you think? Do comment at the comment section below as well as during this video. और बाकी सारे क्रिकेट खबरें के लिए आप चेक कर सकते हैं Dafa News website where along with all the latest news, scores and results you'll find my columns. चलिए देखते हैं. काफी क्या कहूं मैं, काफी थोर्नी इशू है ये. बहुत लोग तो कहते हैं इस चैनल पर कि हाँ उनको ब्रेक चाहिए, आईपीएल आ रहा है, लेट्स सी. मनीष गुड मॉर्निंग मनीष. मनीष मजाकिया मूड में. अश्विन सरफराज पाटीदार should be released to play Ranji semis. Patidar might go back actually, but who knows? We already won this series, so we can give opportunity to new player. Who are these new players? There's no new player who's uncapped when it comes to the fast bowling department. Mukesh Kumar खेल चुके हैं, मोहम्मद सिराज खेल चुके हैं और आकाशदीप खेल चुके हैं. So yeah, there's no such new player who could get a chance in Jasprit Bumrah's absence. Best team available should play as we maintain momentum. सही बात कहा अमित, सही बात कहा. Siraj might be rested. Akashdeep and Bumrah might play. Yes, I heard such reports. Possible. Management always prioritize IPL over Test series. They skip fifth test in England in the name of COVID. Yes. I remember that. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. Good morning प्रभाकर, कैसे हो? राहुल भाई भी लंदन जा रहे हैं. हाँ, सुना मैंने ये खबर. Bumrah should certainly play to improve chances of test win. बिल्कुल, just because you won the series, हल्के में मत लेना. Finish it up. Smash baseball 4-1. शौर्य कह रहे हैं Bumrah will be back for fifth test as per CricBuzz report. Okay. Also, they're prepping the typical Dharamsala pitch, not bringing the pitch to favor spinners. Good bounce. We need bounce. India most likely play 3 speed seamers to spin. यानी कि अगर खबर है कि सिराज ब्रेस्ट लेंगे तो सीमर्स होंगे हमारे बुमराह, मुकेश और आकाशदीप. Interesting. Bumrah should be included for fifth test. Yes, I agree.
बीपीएल कवर करो प्लीज। भाई मैं बीपीएल नहीं देखता दोस्त मेरे, माफी चाहूंगा। उमरान मलिक किधर है? उमरान मलिक कहीं होंगे। देखिए उमरान मलिक का नाम अक्सर आता है, लेकिन उमरान मलिक रेड बॉल बॉलर नहीं है, वो केवल व्हाइट बॉल बॉलर है। तो जो इंसान रेड बॉल क्रिकेट ही नहीं खेल रहा है वो टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलेगा यार? ऑब्वियस बात है यार। Can Ashwin or Jaddu be rested to include one more pacer? Yes, they can, Prabhakar. There's no reason to say why they cannot. But these are not players who are ever rested. जब से ये जोड़ी इतनी मशहूर, इतनी सक्सेसफुल, इतनी पोटेंट बनी है, और क्योंकि दोनों का बैटिंग योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता नहीं है कि इनको ब्रेक दिया जाएगा. Of course, if the IPL franchises, especially CSK, make a few calls to the BCCI and say, give us Jaddu, a fresher Jaddu. So yes, there's every reason to expect that Jadeja will be rested, but somehow I just don't think it'll happen. Just my gut feeling. Should a chance be given to Washington Sundar? Absolutely, as discussed in many live streams. Should we try fast bowling all rounders in home tests? We don't have any currently. Exactly, my friend. So if we don't have any, who do we try? जवाब आपके सवाल में ही है. जब है ही नहीं तो किसे खिलाएंगे? Don't get this weird strategy, guys. We've been selected for World Cup because of IPL performance. Also, now they want people to play Ranji. Also, they're managing workload tests, but there'll be none of that in IPL sense. थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके एक दो कॉमेंट्स, लेकिन मैं आपकी जज्बात को समझ गया. देखिए आईपीएल इज द फाइनल से इन वेदर यू प्ले T20 क्रिकेट एंड वनडे क्रिकेट फॉर इंडिया. ठीक है, सबको पता है. IPL does not get you into the test team, right? So the statements of Jay Shah and Rohit Sharma and a couple state associations is, भाई आपको टेस्ट में आना है तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा. आईपीएल नहीं, स्मैक नहीं, आपको रणजी ट्रॉफी, आपको दुलीप ट्रॉफी, आपको जोनल, आपको बेसिकली 4 डे रेड बॉल क्रिकेट खेलना पड़ेगा टेस्ट में आने के लिए. आईपीएल criteria. A lot of people ask me, Ishan Kishan might not play a test match again, but if Ishan Kishan is preparing himself for the IPL and has a good IPL, by every means, he should get a chance to play the T20 World Cup. But by skipping 8 rounds, let me remind you, 8 rounds of the Ranji Trophy, how does Ishan Kishan and his well-wishers, how do they expect him to come back into the test team? IPL के performances पर आप टेस्ट मैच तो नहीं खेलोगे भाई. ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो आईपीएल के सफलता पे टेस्ट मैच खेल चुका है और आगे जाके भी नहीं होगा. Is Kane Williamson really a home bully? As in, only scores runs in New Zealand? Absolutely not. He's got hundreds in India, Australia. He's got in Sri Lanka. He's got in. Let's just check out Kane. It's a good question actually, but Kane Williamson, is he a home? Well, I'm assuming. सवाल किसने पूछा? Nimesh, I'm assuming you're asking. वैसे हम Kane Williamson के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? It's for another day. Yeah? We're talking about India today. Sorry. We'll talk about it later. Is it important for WTC? It is, of course. Yes, it is. केएल राहुल जितने मैच नहीं खेलते उससे ज्यादा उनके इंजरी अपडेट आ रहे हैं रोज. किसी ने मजाक में कहा था इस लाइव स्ट्रीम पर कुछ महीने पहले कि केएल राहुल का एक परमानेंट प्राइवेट स्वीट बुक होगा एनसीए में. I mean, KL Rahul, Deepak Chahar, Shreyas Iyer. No, not Shreyas Iyer, actually. Not that bad, actually. Washington Sundar, Hardik Pandya. ये प्लेयर ज्यादा बाहर बैठते हैं ना कि खेलते हैं. So it is surprising. Hi Asif, how are you? मनीष कह रहे हैं रोहित, जायसवाल, गिल, पाडिकल, सरफराज, जुरेल, सुंदर, अश्विन, सिराज, बुमराह, आकाशदीप. हाँ, अगर जडेजा रेस्ट लेते हैं तो सुंदर आते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं. somehow just my gut feeling, I don't think Jaddu will be rested, but who knows? Let's see. Bumrah should definitely play because the match is in Dharamsala, which is traditionally a seam-friendly venue. It is, but Kuldeep also used the bounce brilliantly there to get 4 wickets on day one of his debut test match. Nimesh, Ben Stokes says that board are using cricketer like their vehicle, and Ravi Shastri also support that statement. 3 format really created a workload. बात तो सही है. There is a need for workload management, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह के साथ किया था मेरे हिसाब से वो तो वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है भाई. जसप्रीत बुमराह 1 साल के बाद तो वापस आए. उनको जैन के महीने में 2 हफ्ते की ब्रेक मिला. उनको दूसरे और तीसरे टेस्ट के बीच 9 दिन का गैप मिला. और वो केवल, अगर आप देखें, 3 टेस्ट मैच 80 ओवर, यानी कि 26 ओवर पर मैच और 13 ओवर प्रति इनिंग्स. क्या आप कह रहे हो कि जसप्रीत बुमराह 14 ओवर नहीं डाल पाएंगे? हर इनिंग्स में 14 ओवर डालकर उनकी बॉडी पे कुछ लोड रहेगा? Utter nonsense. There was nothing like that. This decision has nothing to do with workload management. Something else was the case.
if you're going to be managed after bowling 13 overs per innings and 26 per match, तो भैया आप फास्ट बॉलर बने ही क्यों? It just doesn't make sense, you know. Of course, I know there's Mumbai Indians lobby and there's the IPL and the T20 World Cup, but यार चौथा टेस्ट मैच खेलते, पांचवा टेस्ट मैच के लिए ब्रेक देते. अब क्या, अब ये स्टेटमेंट थोड़ा मजाकिया लग रहा है बिकॉज इंडिया वन द मैच, यू नो. सो लोग कहेंगे ये देखो यार जसप्रीत बुमराह की जरूरत नहीं थी, बट I just found it very, very weird that Bumrah was dropped in the name of workload management for a test match when the series was still open. अब लेते break 5 मैच के लिए, which is why I hope he comes back. Good morning, Shashank. How are you? Your thoughts on the ongoing? Oh, we've discussed this. Absolutely shocking, and the lack of a comment or action from the BCCI also rings very loud. Very sad. Will Patidar be given another chance? Yes, I think there's every chance. हालांकि मैं तो बहुत बार कह चुका हूं, मैं तो इस पिछले टेस्ट मैच से पहले भी कह चुका था कि I don't think Patidar should play the fifth test match, irrespective of what happens in Ranchi, because he's not looking right now in the right zone. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टेस्ट के लायक नहीं है, लायक है, बट फिलहाल इनका जो एक 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 एटीट्यूड है, एक एप्टीट्यूड है, एक अन अनसर्टननेस है उनके उनके हैंड आई कोऑर्डिनेशन में, उनके फुटवर्क में. मुझे लगता नहीं है कि फिलहाल इस स्टेज पर वो टेस्ट मैच के लिए रेडी है. तो और क्या फायदा, ये कल भी कह चुका था, ये मैंने परसों कहा, अगर पाटीदार अगस्त और सितंबर के महीने में जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड आएगी टेस्ट मैच खेलने के लिए, अगर वो आपके प्लान्स में नहीं है तो क्या फायदा ये 5 मैच, ये पांचवा मैच खिलाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई तुमने बड़ी मेहनत की यहां तक आने के लिए. I don't think so. So I don't want to see him play personally, but with Rahul Dravid around, anything is possible. I think we'll do a more detailed show on this tomorrow or day after, on Patidar, as well as who could possibly replace him. Good question, Ishan. Thank you. Bumrah should rest considering huge IPL and World T20, and India needs again, I understand कि आप कहाँ से आ रहे हो, but for me, Test cricket will always remain the pinnacle. Um, he should have skipped the fifth test match, played the fourth test match, wrap it up. Why walk away from a test series when you're not injured, when there's no niggle? अगर आपको T20 World Cup के लिए, my point is, like many of you say, why don't these players rest in the IPL? Why do they skip national duty? National duty से बड़ी बात कुछ नहीं होती है. IPL तो एक प्राइवेट क्लब टूर्नामेंट है, मानता हूं बहुत पैसे उसमें, देश के लिए खेलने से ज्यादा पैसे, but always leaves a sour taste when someone skips a test match, but then doesn't skip a single IPL match. But again, Anup, we can agree to disagree. Will Dave get any chance? Like I said, Shreyas, possibility है, but ये शायद हमें दो तीन दिन बाद मालूम पड़ेगा, when the news comes of who's rested and who's not been rested. It looks good that some players don't want to play tests. For example, Ishan should play only T20 ODI. Bilkul, if, like I've said, I think Ishan Kishan, with his actions or his non-action, in fact, has said, like Hardik Pandya said 6 years ago, कि मुझे खेलना ही नहीं है रेड बॉल क्रिकेट. ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन उसके बाद कभी ये मत बोलना कि भाई मेरे साथ जाती हुआ, टीम ने मुझे 12th मैन बनाया, आपको नहीं खेलना था. ठीक है, मेरे हिसाब से he's made it loud and clear, and all the best to him. I hope he has a flourishing white ball career. युजवेंद्र पिक्चर में ही नहीं है. कहा टेस्ट मैच में? देखो, जो इंसान रेड बॉल क्रिकेट खेलता ही नहीं है डोमेस्टिक में, वो बंदा कैसे खेलेगा टेस्ट यार? जय भाई, मुझे लगता है बेंच ट्राई करना चाहिए सीरीज में. हाँ सही बात है, बेंच यानी कि वॉशिंगटन सुंदर और पार्टिकल, वो दो ही प्लेयर हैं जो अब तक नहीं दिखे. आई थिंक दे बोथ विल गेट अ चांस. बिल्कुल सही कह रहे हो आप. यस पवन, देवदत्त पार्टिकल शुड, विल डू अ डिटेल्ड शो टुमारो और डे आफ्टर ऑन दीज टू ऑप्शंस. सर, व्हाट्स हैपनिंग विद केएल राहुल विद ऑल ग्लूमी? कोई ग्लूमी नहीं है दोस्त, कोई ग्लूमी नहीं है. आईपीएल जैसे ही शुरू हो जाएगा, बंदा हाजिर होगा फुली फिट. कोई ग्लूमी नहीं है भाई. Yes, he's gone to London. I've also heard this, but there's nothing gloomy. He will be fully fit for the IPL because IPL is what all these players want to play right now. I don't get workload managed only for बिल्कुल मेरे दोस्त, यही तो मैं पूछ रहा हूँ. ये वर्कलोड मैनेजमेंट केवल और केवल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट, देश के लिए खेलते समय ये वर्कलोड मैनेजमेंट होता है. आईपीएल में तो कोई वर्कलोड नहीं होता. 14 के 14 मैच के लिए ये लोग साले फिट हो जाते हैं. आई गेट इट. व्हाई कैन दे बी रेस्टेड? वेल, आई नो व्हाई, बिकॉज रोकड़ा पैसा वहीं से आता है. I'm sure BCCI can always compensate their star players. Oh, they do, my friend. They do. But like I've said in many, many past live streams, the BCCI has no say over the IPL, how it runs. The franchises
Franchises will always be here when it comes to players and selection, and BCCI will come here. बहुत एग्जांपल्स हैं इस बात के. आईपीएल में 4 ओवर्स होते हैं प्लस मनी. नो लोड ऑन बॉडी लाइक टेस्ट वेयर ह्यूज प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड. Very, very possible, but I'd be shocked if that were actually true in the case of Jasprit Bumrah. अगर ऐसा होता तो फिर वो पूरे टेस्ट सीरीज के लिए एक इंजरी फेक करते. Maybe they pick IPL because BCCI does not support his players as well as franchises. Uh, no, the BCCI really takes care of its players. That's why the contracts are so lucrative. Ben Stokes is NPA. इस सीरीज में एज अ बैट्समैन तो ये बिल्कुल एनपीए बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस एरा. नेशनल ड्यूटी से बड़ा नहीं हो सकता आईपीएल. सचिन तेंदुलकर रिटायरमेंट तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल रहा था. बात सही है, बात सही है, बात सही है. Yes, but say overall, except that one time when after the World Cup and the IPL back to back, he skipped a test tour. That surprised me. I would have thought que Sachin could have skipped the IPL instead, but yes, overall he was playing first class cricket. Our captain needs rest. Let Bumrah lead in the final test. Does he need rest? I think he needs more time at the crease to understand batting. But the harsh truth, everyone like IPL, including in legend player, they're more important. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. IPL is the biggest cricket tournament in the world. ये तो वर्ल्ड कप और WTC से बड़ा टूर्नामेंट है. इसीलिए 11.5 साल से हमारी टीम कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीत के लिए लाई. आईपीएल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉफी फॉर इंडियन क्रिकेट. सब जानते हैं भाई, सब जानते हैं. Why the second order seniors, other except Ashwin, Kohli, Rohit, are not consistently playing Test cricket? They're either. I get where you're coming from. KL Rahul often gets injured. Shreyas Iyer had a bad time out, and then uske baad he just couldn't score runs. Shubman Gill plays a lot of Test cricket. Jadeja plays a lot of Test cricket. Bumrah plays a decent amount. और कौन खेलता है यार, और कौन है? Jaiswal तो सारे टेस्ट मैच खेल चुका है. But I get where your question is coming from. Good morning, Sai Chaitanya. How are you, my friend? Why is Chahal not considered? That's because, my friend Kopulu, you have to be playing red ball cricket to be picked, right? When was Chahal's, like, second? When was Yuzvendra Chahal's last red ball match for Haryana? Let's try and find out. Yuzvendra Chahal's last first class match was, एक second, na? I think he doesn't. Yeah, he's not. He last played a first class match in county cricket in September, but if I'm not mistaken, he didn't play for Haryana for the last 2 seasons. It's very simple. You want to play Test cricket or you want to be considered for Test cricket, you have to play red ball cricket. And unfortunately, he doesn't play. He doesn't play red ball cricket, so that's why he's not selected. पिचेस कैसे थे 4 मैचेस में? बढ़िया. 3 शोज किए मैंने इसी बात पर. सबसे बेस्ट पिचेस जो मैंने इंडिया के अंदर 2019 से देखा है. वेरी वेरी बैलेंस्ड. इसमें जायसवाल डबल सेंचुरी मार चुके. इसमें ऑली पोप 190 मार सके. इसमें फास्ट बॉलर्स ने बहुत विकेट्स लिए. इसमें स्पिनर्स ने विकेट्स लिए. व्हाट मोर डू यू वांट? 19 से लेकर इस साल तक, 23 तक माफी चाहूंगा, जो रैंक टर्नर्स पे इंडियन टीम ने खेला, 100 कहां है? विराट कोहली 4 साल तक 100 क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि भैया रैंक टर्नर्स पे 100 मारना बहुत मुश्किल है. एक 100 मारा विराट कोहली ने 4 साल के अंदर. दैट्स बिकॉज अहमदाबाद टेस्ट लास्ट ईयर वाज अ पाटा. आई एम सेइंग थ्रो द पाटास अवे, थ्रो द रैंक टर्नर्स अवे, थ्रो द अंडर कुक्ड pitches away. Give me Hyderabad, give me Visakhapatnam, give me Ranchi, give me Rajkot. These 4 tracks, the match was over in 4 days. From first session to last session, आपको भरपूर मनोरंजन मिला. You got, when the last time an Indian batsman got a double hundred? I'll tell you why. When? 2019. Rohit Sharma, Mayank Agarwal. Because until 2019, pre-WTC के आने से, these kind of sporting tracks were very very common. But 19, 20, 21, 22, 23 सिर्फ और सिर्फ एक मैच को छोड़कर रैंक टर्नर, स्क्वायर टर्नर, अंडरकुक्ड. मजा आता है जब अश्विन 20 विकेट लेते हैं एक सीरीज में, 30 विकेट लेते हैं. पर भैया बैट्समैन की हालत देखो. These 4 test matches were played on the ideal test pitches in India, according to me. JMI, love your sarcastic comments on IPL. You know it. Sir, if Dev not get chance, it means Rajat and Dev are not in mind of selectors. That's what I said. I don't think Patidar or Devdutt Padikkal are part of the selectors' minds when
टेस्ट सीरीज रिज्यूम्स इन अगस्त, बिकॉज देखो भैया, अगस्त के महीने में या सितंबर के महीने में जब बांग्लादेश आएगी और उसके तुरंत बाद न्यूजीलैंड आएगी, तो तीन ऐसे प्लेयर होंगे जो खेलेंगे: विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत। तो जब ये तीन आएंगे, सरफराज, पाटीदार और जुरेल, तीनों को साइड होना पड़ेगा। सो यस, these players are not in their plans, very obvious. हार्दिक पांड्या चहल को बाहर करने में लगा हुआ था वेस्ट इंडीज से। हाँ, Chahal is not got much of a chance these days in white ball cricket. Pressure of IPL on Indian players like pressure of EPL on English footballers. Both are not able to win cup. Nice one, Nimesh. After India gets knocked out of the World T20, आप एक शो कर रहे होंगे कि क्या आईपीएल की वजह से नॉकआउट हुई वर्ल्ड कप, बिकॉज आईपीएल, और हम व्यूअर्स भी गालियां दे रहे होंगे। जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने कल के शो में कहा था और उससे पहले बहुत बहुत बार कह चुका हूँ, आईपीएल किस साल में आई? बताना, बताना। Tell me the year the IPL came, the first IPL, and tell me the year that India last won a T20 World Cup. बताइए ना मुझे, आप लोग कमेंट करके बताना। थोड़ा फ्यूचर का क्वेश्चन सही है। Who's our next in line captain? Discussed this yesterday, discussed this day for yesterday, discussed this after Ranchi. There is no one in line. They're not grooming anybody. IPL franchises are forcing foreign players to give their central contract in the leagues. Do you see same happening in India? No, not right now. Not right now. This happens when you have more leagues. Indians can only play one league. That's the IPL. So, ऐसा नहीं होगा भाई. Impossible. Hi Jamie. Does Ranchi match pitches are different from where we prepare? I mean, spinning pitches, and that's why players are not able to play. That's see Shivam. Good question by the way. Ranji match pitches are totally dependent on the host board. केरला में एक ग्राउंड है, मैं नाम भूल रहा हूं, जहां पे बिल्कुल ब्लैक सॉइल पिच है। वहां पे मैचेस 2-2.5 दिन में खत्म होते हैं अक्सर, सालों से। वहां पे जलज सक्सेना बहुत विकेट लेते हैं, और इनका जो दूसरा स्पिनर है अक्षय चंद्रन, जो भी केरला का दूसरा स्पिनर है, ये भरपूर विकेट लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे विकेट लेते हैं। सो अ पिच इज कंट्रोल्ड बाय दैट स्टेट एसोसिएशन, इट इज नेवर गोइंग टू बी द सेम। आप दिसंबर जनवरी के महीने में आप यहाँ पे जाइए, ये जो रोहतक के बाहर एक ग्राउंड है लाली, वहां पे फॉग के कारण सीमर्स एक दिन में, 2 दिन में मैच खत्म करते हैं। मिनट भी ऐसा है। You will see the kind of conditions. Rajkot is where teams in Ranji score 600, you know. So pitches get a certain reputation because the host boards only and only play it like that. ऐसा कहीं नहीं है कि जो हमारे कितने 36 34 36 रणजी ट्रॉफी टीम्स है, इनके ग्राउंड सारे एक जैसे हैं। सो आई गेट योर क्वेश्चन। देयर आर सर्टेन ट्रैक्स व्हिच आर नोन टू बी, देयर इज वन ग्राउंड इन चेन्नई, इधर केम्प्लास्ट, that's known to be a very very bad wicket. Visiting teams hate to play there because it's very very tough. So there's no one view you can form of Ranji Trophy matches. There's all sorts of pitches, but yes, they do have an impact when a player suddenly comes from playing on a certain kind of track into the India A or the zonal level. But that's why players who only score runs in one kind of condition, or bowlers who take wickets in one kind of conditions, they rarely play for India. Ground condition of Dharamsala was poor during World Cup. Yes, and a test match last year, the third test match was shifted from there. I had the same thought, Manish. थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा। बिल्कुल यूपीएससी सीएससी 2008 8 8 और इंडिया पहली और आखिरी बार टी20 वर्ल्ड कप कब जीती थी? 7 में। तो आईपीएल के आने से एक भी टी20 ट्रॉफी आई नहीं। गौर करिए इस बात पर। क्या होगा 16 साल की आईपीएल की सफलता के साथ जब ये विश्व का सबसे बड़ा टी20 लीग आपको एक टी20 वर्ल्ड कप नहीं दिला सकी? गौर करिए इस बात पर। निमेश पांडे, इन वर्ल्ड टी20 2010 धोनी टेल दैट दे टायर्ड बिकॉज ऑफ आईपीएल एंड स्टुअर्ट ब्रॉड टेल दैट दे वन बिकॉज दे डिडंट प्ले। सेम थिंग हैपेंड 21। हाँ, बात सही है। It's always going to be a thorny issue. 2007 India won World Cup and that because IPL came into picture. बिल्कुल सही कह रहे हो आप। What's your opinion on Virat statement a few years ago that as a country we should have few test centers where we know what kind of pitches are going to be there? बात सही है, बात सही है। I'm all for the game being spread to smaller venues, but why is it that since 1986 no test match between India and England has been held at the Kotla? Why has the finest test series in India that I have witnessed 2001 की वो ऐतिहासिक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज जहां पे कलकत्ता के ईडन गार्डन्स पे द्रविड़ लक्ष्मण ने कमाल किया, why is it that 23 years later Australia and India have never played a test match at the Eden Gardens? I'm also for this. Keep
6-7 centers and play there. Don't go to these far-fetched places. वहां पे आप वनडे और T20 IPL भरपूर कराइए. ऋषभ, क्या बीसीआईसी को इग्नोर करके अपना खुद का क्रिकेट एसोसिएशन बना के पूरे वर्ल्ड मैच? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. लाली इज ग्रेवयार्ड ऑफ बैट्समैन. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. क्रेजी क्रेजी प्लेस. जी भाई, इंडियन बैट्समैन पहले से स्पिन नहीं खेलते हैं, अब स्पिन के सामने. ओहो, अच्छा. ये मेरे ख्याल से मेरा जो एक सेकंड भाई, यू मिस्ड द वीडियो आई डिड ऑन दिस. एक सेकंड, मैं क्यों यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करूँ इस सवाल का जवाब देने में, जब मैंने पूरा एक वीडियो किया था इस पे. भाई मैंने वीडियो किया था इस पे. एक सेकंड, मैं लिंक ढूंढ के ना. ये लो, ये लो. लो भाई, किसका आया सवाल? हार्दिक भाई का आया था. देखा भी होगा हार्दिक ने वैसे. ये देखो यार, इसमें सब बताया मैंने. So do you think the curtains are closed for Pujji and Rahane being the best? Long time back. Rahane's got like some 3 ducks. Rahane cannot buy a run. How will he come back? Yeah. Youngsters ko khilao. Yeah. Let Gill play. Let Dhruv Jurel play. Let the Sarfaraz Khan play. Ho gaya inka time. Yeah. Amazing batsmen in their own right. Ho gaya, ho gaya, ho gaya. Young guns will misfire. All these guys were young guns. If you don't play young guns, how will they improve? Is it a coincidence? The only 2 times a 150 plus score was chased since 2013, यानी कि 2013 से 11 साल से केवल 2 बार एक इंडियन टीम 150 से ऊपर टोटल चेस कर सकी. वन, द गैबा, जहां पे गिल ने 90 मारे. ऑफ कोर्स पुजारा का बहुत बड़ा योगदान था, राइट. बट देन सुंदर एंड ऋषभ पंत, यंगस्टर्स. और 2 दिन पहले 192 का टारगेट. Who was at the finish line having scored the most runs? I know you need experience. रोहित का 50 बहुत इंपॉर्टेंट था, बट एक 22 साल का लड़का और 23 साल का लड़का फिनिश लाइन में थे जब मैच खत्म हुआ. यू नीड यंगस्टर्स माय फ्रेंड. बहुत हो गया सीनियरिटी, बहुत हो गया भाई. कोई ट्रॉफी नहीं मिला सीनियर से. जो सबसे मनोरंजन वाले मैच हम याद करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लोज रिजल्ट्स, जरूर देखना, उसमें यंगस्टर्स का योगदान बहुत बड़ा होगा. बिकॉज आजकल फर्स्ट क्लास कम खेलते हैं. नॉट श्योर व्हाट द क्वेश्चन वाज इट, बट ठीक है. व्हेन कैनी एंड चेतन अरोड़ा डू अ. Chetan has been asking me for about a month now to start a weekly podcast with him, and we definitely plan to do a podcast together. So stay tuned. It's in the pipelines before the IPL. Mumbai, Chennai, Ahmedabad, Kolkata, Delhi, Dharamshala. Sahi baat hai. I would throw in Bangalore as well. We got a lot of gripping results over the last 20-25 years in Bangalore. So yes. पिछले साल बीजीटी में तो नहीं कर पाए, पर क्या इंडिया WTC फाइनल के लिए प्रेप करना चाहिए? ऑल्सो व्हाई डजंट इंडिया बिड फॉर WTC फाइनल? पहला बात, they can do what they want to do. It's a different ball game. Why doesn't India bid for WTC final? It's kind of tough, yeah, to find a perfectly conducive test venue in the months of June and July in India. ना या तो बारिश है या गर्मी बहुत है. London, to my mind, is the only, or England for that matter, is the only country in the world which, in the months of June and July, can host you a perfect test match. So, of course, rain is there, but we saw the Oval Test match last year. All 5 days, not a drop of rain. Bharpur packed crowds. India, it's tough, man, to get in June and July to find a perfect test venue. Indian teams don't play test cricket in the month of June and July. So that's why. Yes, Gaurav, Chetan and I will be doing it soon. Hi, VKC. सचिन और बाकी सीनियर 2007 का T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं खेला था? क्योंकि उस समय, अगर आपको याद नहीं है, तो बीसीसीआई सारे सारे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड्स में से बीसीसीआई आखिरी बोर्ड था जिसने T20 को अपनाया. जब ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सारे देश, साउथ अफ्रीका, ये डोमेस्टिक T20 खेल रहे थे, तो बीसीसीआई इस पे हंस रही थी कि भाई ये क्या फॉर्मेट है. 1 साल तक उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पे किया था. और जब सिलेक्टर्स ने, दिलीप वेंगसरकर सिलेक्टर थे, जब उन्होंने वो टीम चुना 2007 के लिए, तो एक कलेक्टिव व्यू था कि यार ये क्या बच्चों का गेम है. इसलिए बहुत सारे यंगस्टर्स को भेजा गया. अब हुआ क्या कि वो यंगस्टर वाला फॉर्मूला चल गया. धोनी, उत्तपा, सुरेश रैना, गौतम गंभीर,
इरफान पठान, यूसुफ पठान और थे उसमें कुछ यंगस्टर्स, आरपी सिंह, इन लोगों ने कमाल करके दिखा दिया। तुरंत अगले टी20 में ये सब प्लेयर्स आने लगे। द फर्स्ट टी20 इंडिया प्ले दे वन इट, उसमें वसीम जाफर ने ओपनिंग किया था, उसमें उसमें दिनेश मोंगिया थे, उसमें सचिन थे, बट द प्लेयर्स लाइक यार ये बच्चों का खेल है। दैट्स वाई ये सीनियर्स कभी टी20 वर्ल्ड कप साथ में नहीं दिखे। Thanks to BCI politics, Himachal, Motera will never become far-fetched places. Interesting. Good morning, Kamal. Jaiswal is find of the series. No, Jaiswal was the find of his debut series in the West Indies. By this time, we all knew what he could do. But yeah, do you think BCI has changed its approach in team selection after World Cup loss, which makes me very optimistic about this WT cycle? In white ball cricket, we are saturated. How did the BCCI change its team selection after the World Cup loss? प्लेयर्स तो वही वर्ल्ड कप हारे और टी20 वर्ल्ड कप के लिए दो प्लेयर को वो वापस किया जो 14 महीने के लिए टी20 खेले भी नहीं थे. सो आई डोंट गेट योर क्वेश्चन. Nothing has changed in terms of selection. Ashwin and Jadeja deserves hike in their salary. Yes, I agree. England hosts the WC final because no matter who will reach final season, all premiers live there due to business job. WC final will get audience any money. Commerce also plays a role. Your thoughts on baseball? I talk about baseball every single day. We talked about baseball yesterday. I'm not repeating myself. You know my views. You join all my live streams. I'm a big fan of baseball. Bumrah should play. If he needs rest, there are 11 days after a fifth test. Bilkul. He got 15 days in January. He got 9 days between the third and fourth test matches. He's getting 6 days now. I don't know what this. कुछ तो है जो मेरी समझ से बाहर है. Why is it after having so much money, BCI is usually the board to adopt new technology last? Because players have a say in this. Also, you see the broadcasting of Fox and Sky Sports England are relative higher in quality. बिल्कुल. मैं तो 8 साल हो गए जब भी इंडिया के अंदर कोई सीरीज है मैं तो म्यूट पे सुनता हूं. मैं सिर्फ एबीसी इन ऑस्ट्रेलिया और स्काई स्पोर्ट्स इंग्लैंड, मैं अपने कमेंटेटर्स को मैं सुनता नहीं हूं. 8 साल हो गए घर पे मैं म्यूट पे सुनता हूं क्रिकेट. रियली रियली लो स्टैंडर्ड. बैटिंग ज्यादा, बॉलिंग का ट्रांजिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आकाश इज अ ग्रेट फाइंड दैट वे, बट वी विल इंक्लूड हिम इन फॉर्मेट्स लाइक. बिल्कुल बर्बाद कर देंगे ये सरफराज को, बर्बाद कर देंगे जुरेल को, बर्बाद कर देंगे टी20 में खिला 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 के. बड़े मुश्किल से हमें एक बेहतरीन सेकंड कीपर ऑप्शन मिला. क्या बैटिंग किया भाई जुरेल ने. अब ये इसको ठूसेंगे. टी20 में है ना यार, ईशान किशन को टी20 खेलने दो. कौन है वो, जितेश शर्मा, बढ़िया प्लेयर है यार. क्यों जबरदस्ती सरफराज को खिलाओ वनडे, क्यों. जायसवाल ही वो इकलौता युवा खिलाड़ी है जो अभी 3 फॉर्मेट खेल सकता है. अभी तक वनडे नहीं खेला लेकिन मैं खिलाऊंगा उसको. शुभमन गिल को मैं अंतरराष्ट्रीय टी20 से बाहर रख के सिर्फ और सिर्फ उसको टेस्ट और वनडे के लिए रखूंगा. मैं ऋतुराज गायकवाड़ को भी टेस्ट मैच खिलाऊंगा और एक आध टी20 मैं उसको वनडे में नहीं खिलाऊंगा. यहां पे भाई सबको खत्म कर दो तीनों फॉर्मेट खिला के. Why don't BCI make a contract at the time of the player who joins Ranji or Nandi that they will prioritize national duties over franchise? You might see it. That's why there's a cap in the IPL कि केवल एक under 19 player एक IPL 11 में आ सकता है. And I think that day is not for BKC when we see that. Ravi Shankar, India give rest some players. Ravi Shankar, you have joined this live stream 33 minutes too late. We spent the first 15 minutes of this live stream discussing that same question you have asked. Go back and read the comments. Go back and read. We discussed all the possibilities why players, Jadeja, Rohit, Siraj, why they'll be rested. Shivam, last question, then I got to bounce. Does it have to do less BCI and more with broadcasting companies spending more time on advertisement and innovation? It's a good question. Probably. I would say yes. I would say yes. I would say yes. Good question, my friends. Anyways, हो गए आधा घंटा, sorry 34 मिनट हो गए. Gotta go and get my day started. Thanks for watching. Love you all. कल करेंगे. I think कल या परसों we'll pick up on a few of your questions here. The Patidar versus Particle debate for the fifth test. Have a great आज क्या है Wednesday. Have a great Wednesday. Love you all.